Hello students, in our previous lecture we have finished Faraday's laws of electromagnetic induction as well as Lenz's law. In Faraday's second law, we have studied one equation which was EMF is directly proportional to change in flux. Correct? Now we know that proportional sign रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट इंक्लूड करना पड़ता है. Now that constant value comes as 1 in this case. Okay, so this becomes the formula E is equal to d phi by dt. From Lenz's law, what we have studied is this induced EMF direction is such that it opposes the change which is causing it. Correct? So opposition है, so oppose हो रहा है मतलब नेगेटिव साइन आना चाहिए. So that is why इसमें हम नेगेटिव साइन भी इंक्लूड करते हैं. ओके, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो नेगेटिव साइन है दैट इज जस्ट फॉर सजेस्टिंग दैट डायरेक्शन इज ऑपोजिट. अंडरस्टूड? अगर आपको वैल्यू फाइंड करना है ईएमएफ का देन दिस मच इज इनफ, d phi by dt. उसमें नेगेटिव साइन देने की जरूरत नहीं है. गॉट दिस? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी वन मोर फार्मूला ऑफ ईएमएफ, induced EMF, which is equal to BLV, as well as third formula for EMF, which will be equal to half B omega L square. So पहले ये formula सीखते हैं कैसे आता है. Okay, so here in the diagram you can observe that I have marked crosses. क्रॉस का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ. यहाँ पर एक बड़ा सा नॉर्थ पोल है, बोर्ड के पीछे साउथ पोल है, एंड यू नो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, तो ऐसा बोर्ड के अंदर जाएगा. दिस ABCD इज अ रेक्टेंगुलर फ्रेम. ठीक है, कॉपर का बनाया हुआ एक रेक्टेंगुलर कॉइल समझो. क्लियर? BC इज मूवेबल. अंडरस्टूड? सो लेट मी राइट BC इज मूवेबल, मतलब आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो. एंड वही करना है हमको, ये BC को थोड़ा स्ट्रेच करना है, मूव करना है विद सम वेलोसिटी v. गॉट दिस? Now L is the length of this rectangular coil and इधर मैंने x लिखा है. Okay, that is the breadth. So area of this coil, if I want to write, it will be equal to L into x, length into breadth. I hope यहाँ तक आपको समझ गया. Now try to understand magnetic field present है first finger. ये BC को हम मूव करने वाले हैं. ठीक है, मोशन होने वाला है. So मोशन किससे डिनोट करते हैं हम? थंब से. तो ये दोनों मिलकर क्या जनरेट करेंगे? EMF, that is induced current. Got this? So यहाँ पर करंट इंड्यूस होने वाला है. Clear with this? Now what is the reason that EMF is induced? Faraday का फर्स्ट लॉ कहता है फ्लक्स चेंज होना चाहिए. अब यहाँ पर फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या? Yes. कैसे चेंज हो रहा है? Let's try to understand. फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता है, it is B into A into cos theta. यहाँ पर हम cos theta का वैल्यू 1 कंसीडर कर रहे हैं. So जब ये BC मूव करेंगे हम with some velocity, x का वैल्यू चेंज होगा, x will increase. करेक्ट और नॉट? So x जैसे ही बढ़ेगा उसके साथ एरिया भी बढ़ेगा. एरिया इंक्रीज हुआ मतलब फ्लक्स भी इंक्रीज होगा. तो कहीं ना कहीं here what I can say that flux is changing. More lines of force are passing through this particular area, and that is how EMF is going to get induced. Got this? Now let's try to find out this formula. By second law, I can write EMF is equal to d phi by dt. Okay, and phi का formula I will write as B into A. Got this? Then area का formula I told you length into breadth, so that will be L into x. Got this? Now B L बाहर आ जाएगा, dx by dt. So I hope आप 11th standard से पढ़ते आ रहे हो. dx by dt is nothing but the velocity. So that is how EMF will be equal to BLV. Okay. Let's go for the second part. ये पार्ट में चेंज क्या है? Here we have a rod जो कि रोटेट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में. इधर ट्रांसलेशनल मोशन किया था अभी हमने. ओके, इट वाज अ लीनियर मोशन. ठीक है, स्ट्रेट था. यहाँ पर रोटेशन होने वाला है एंड दिस इज दैट पिवोट पॉइंट. पिवोट पॉइंट मतलब यहाँ पर इसको फिक्स करके ऐसे रोटेट होने वाला है. सो डेफिनेटली मोशन है. करेक्ट और नॉट? थंब इज देयर, मोशन इज देयर.
magnetic field again into the board, तो definitely ये क्या करेगा, करंट को इंड्यूस करेगा, and that is due to EMF. तो वो EMF का फॉर्मूला ये आएगा. Since circular motion I can call, so angular velocity इसमें include होने वाला है. What is L? L is the length of this rod. But this now we have already studied E is equal to BLV. Correct? तो रॉड का वेलोसिटी v है. हम क्या कर रहे हैं, ये रॉड का एक पर्टिकुलर छोटा सा सेगमेंट कंसीडर कर रहे हैं. इफ यू कैन ऑब्जर्व, यहाँ पर एक छोटा सा सेगमेंट है जिसको मैंने dr से डिनोट किया है. वो छोटे से सेगमेंट का लेंथ हो गया. तो हियर आई विल राइट v तो रहेगा वेलोसिटी, बट लेंथ के बदले क्या लिखेंगे हम लोग, dr. व्हाट दिस नाउ. अब छोटे से सेगमेंट का अगर आप EMF फाइंड करोगे, so obviously that will also give you a small amount of EMF DE. हमको तो टोटल EMF फाइंड करना है. तो व्हाट आई विल डू, टोटल EMF अगर फाइंड करने का है E, that will be equal to integration of DE. ऐसे सारे सेगमेंट्स का मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. अब कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टिल द लेंथ. व्हाट इज पूरा लेंथ कवर करना है. So I will write from 0 till L. Okay. Now 0 till L. D के बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग, B B D R. What is then from circular motion you know this formula, V is equal to R omega. ये substitute कर दो इधर. So that is how E is equal to 0 to L B R omega dr. Okay. So integration किसका possible है, R dr का. तो b ओमेगा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 0 to L r dr. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ x इज नथिंग बट x स्क्वायर बाय 2. मैथ्स में आप पढ़ोगे या तो पढ़ भी लिया होगा 11th स्टैंडर्ड में. सिमिलरली r का इंटीग्रेशन क्या होगा, r स्क्वायर बाय 2. सो माय नेक्स्ट स्टेप विल बी b ओमेगा r स्क्वायर बाय 2. एंड ये जो वैल्यूज रहता है वो हम इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं एज लिमिट्स. नाउ it's time to substitute upper limit instead of r. फिर नेगेटिव साइन आएगा बीच में, लोअर लिमिट इंस्टेड ऑफ r. तो डिटेल में मैं दिखाता हूं. b ओमेगा ये सब्स्टिट्यूट करेंगे r के बदले तो आएगा l स्क्वायर बाय 2. देन आई सेड नेगेटिव साइन आएगा. देन 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर इज 0. दैट इज हाउ यू कैन ऑब्जर्व b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2 which is equal to e. And this is matching. This is half b omega l square. Okay students, so we are taking few numericals related to the formula that we have studied. Very simple numericals. See the formula substitution hai. You can observe horizontal wire 20 meter long. So I can write this is the length as 20 meter. It is falling with a velocity of 10 meter per second. So ये हो गया velocity. Okay, and magnetic field is given as 0.5 into 10 raised to minus 4 Tesla. So ये हो गया capital E का value. What they have asked, what is the value of induced EMF? तो E का value पूछा है. So we have just now studied the formula. E is equal to BLV. Okay, substitute करोगे values. Okay, and that is how if you observe you will get answer as 0.01 volt, which you can write as 1 into 10 raised to minus 2. Okay. Let's take one more sum from your exercise. Again, let me tell you simple formula substitution. These terms are only seems at making numerical difficult. See, aircraft जिसका wing span 50 meter है, so इसको length ही समझो. Okay. So this will be written as L is equal to 50 meter. Okay, it is in the horizontal Earth's magnetic field 6 into 10 raised to minus 5 Tesla. So magnetic field का value है 6 into 10 raised to minus 5 Tesla. Okay, and उसका speed 400 meter per second. So ये velocity हो गया. But this calculate the EMF generated between the tips of wings. तो EMF पूछा है. सिर्फ इसको aircraft, wings ये सब terms देकर ऐसा लगता है कि कोई डिफिकल्ट सम होगा, बट इट इज सिंपल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन. E is equal to BLV. सब्स्टिट्यूट करो एंड you will get an answer as 1.2 volt. Okay. Okay, so we are moving for the last question in this session. Okay. From aircraft
we are now directly moving to railways. Okay, air से direct road पे. So you can observe that we are supposed to calculate against the EMF E. Clear? Then there is an axle of a railway which is 1.75 meter long. So ये हो गया अपना length of that axle. ठीक है? And उसका velocity देखो, fixed velocity है 50 kilometer per hour. Now you know 50 kilometer per hour is not the SI unit. So इसको meter per second में करना होगा. And I have already told you the shortcut 5/18. इससे directly ये meter per second में convert हो जाएगा. And magnetic field दिया हुआ है which is equal to 5 into 10 raised to minus 5 Tesla. So this is the third back-to-back sum which seems like simple formula substitution है BLV. ठीक है, तीनों का value substitute करो and you will get answer as 1.215 into 10 raised to minus 3 volt. Okay, that's it. Thank you.